Okay, so streaming starts. So let me start the gravitational field intensity due to mass carried. So this is the today's topic. So students, I'm going to discuss gravitational field intensity inside inside a spherical cavity. Inside a spherical cavity. All right. So what does it mean? So I let you know first. ये मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल मैसिव बॉडी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कभी एप्लीकेबल होता है मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए. You may think like Earth like body or in comparison. Anyway, so this is a spherical body और चलिए इसके अंदर एक पार्ट जो है स्फेरिकल पार्ट, ये स्फेरिकल पार्ट कट आउट हो गया, ठीक है, कट आउट. सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? मास रह गया, सिर्फ इतने में मास नहीं है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज शेडेड वन, इसमें की मास है और बाकी में मास, इस पार्ट में मास नहीं है. So we have to find the gravitational field anywhere, some point P, take any arbitrary point P inside the cavity. इस जगह पे निकाल. So this is it and I would like to tell you कि जब हमें काफी इंटरेस्टिंग है जब हम निकालते हैं gravitational field inside the cavity, आपको ये मालूम होगा कि जब फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे कि ये कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट वेक्टर आएगा. So gravitational field intensity inside a spherical cavity or in a spherical body, you will find it is a constant vector. So that I would like to tell you क्या इसकी वैल्यू होगी. पहले मैं आपको बता दूं कि what is the gravitational field inside a spherical body और मैं it is give और it is inside the earth. आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि gravitational field inside the earth. We consider the earth is a spherical body, जैसे हमने मान लिया. और यहां से डेप्थ डी में आपने ऑलरेडी निकाला है, डेप्थ डी में वैल्यू क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, जी एट डेप्थ डी. और मैंने हमारे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं जी एट डी विल बी जी वन माइनस डी बाई आर. अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं जी आर माइनस डी अपॉन आर लिख सकते हैं. और इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, जी को जी एम बाई आर स्क्वायर, जी विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर. बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक आर है तो जी एम बाई आर की वहीं से आप निकाले थे इंटू आर माइनस डी. अच्छा, आर माइनस डी क्या है, ये रेडियस जो है अर्थ का आर है और यहाँ से डी डेप्थ की हम बात कर रहे थे. तो ये हमने एक ऐसा ड्रॉ कर लिया था, ये इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है. आउटर पार्ट हमने सेल लिया था. तो ये जो इनर पार्ट है जो कोर है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी जो रेडियस है वो आर माइनस डी हो जाएगी क्योंकि हम डेप्थ डी की बात कर रहे हैं. इस अर्थ का रेडियस आर है, डेप्थ डी की बात कर रहे हैं, तो इनसाइड जो स्फेरिकल बॉडी बना उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी. और मैं आर माइनस डी को क्या बोल रहा हूँ, आर माइनस डी को स्मॉल आर बोल रहा हूँ. स्मॉल आर बेसिकली वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सेंटर से स्टार्ट करते हैं, आर की वैल्यू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. नहीं, इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम center of earth और center of spherical body to infinity where small r equal to capital R मतलब वो क्या होता है, सरफेस की बात हो जाएगी. Where small r is less than capital R means inside the earth. Where small r is greater than capital R, then it is outside the earth kind of thing, a spherical body. तो इनसाइड द अर्थ की मैं बात कर रहा हूं तो हमें जी इनसाइड क्या आया, जी आर माइनस डी अपॉन आर. इसको फर्दर हमने सॉल्व किया क्या आया, जी एम बाई आर क्यू आर माइनस डी. ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ लिखता हूं. So let me say like this. देखिए G की वैल्यू पहले बता दो, G इनसाइड की बात करूं, G इनसाइड D मतलब G एट R भी मैं बोल सकता हूँ, डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर. क्या आ जाएंगे आपका जी एम बाई आर क्यू
एंड आर माइनस डी को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, स्मॉल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर मतलब समझ गया ना, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर वेयर वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। थोड़ा सा मैं कैमरा, अच्छा एडजस्ट कर लिया। चलिए, जी आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर क्यू इंटू आर। अब देखिए, लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ और स्फेरिकल बॉडी। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, जी एम इज 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रो इंटू आर बाई आर। देखिए, मैं रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ, बट आप कोई भी स्फेरिकल बॉडी लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसकी डेंसिटी रो है, उसकी मास क्या होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। ऑलराइट, दिस थिंग। अब देखिए, यहां से आर क्यू एंड आर क्यू कैंसिल आउट, राइट। अच्छा, मैं वहां पे जी आर लिख रहा था, बता रहा था, बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ई आर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड आर। मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल acceleration due to gravity and gravitational field intensity at a point will be same। किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करेंगे, यहां से रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी गिरेगी, वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। और इट इज वेरी सिंपल, यू नो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू m है। F is the net force acting on the body, or we are considering the force is only the gravitational force, that is the weight of the body, and weight of the body is, you know, that is m into gravitational force is what? Gravitational force at a point is what? If the body having mass m and the field intensity is E, then gravitational force is me। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर बता देता हूँ। सो एंड वी नो कि ऐसी बॉडी को आप रिलीज करोगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, F इक्वल टू m है। सो A इज इक्वल टू E, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप समझ रहे हैं कि जो G की वैल्यू होगी वही E की वैल्यू होगी। मैं G नहीं लिख रहा हूँ, मैं इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहा हूँ, कि पार्टिकल रिलीज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ई तो हर जगह होगा, जी तभी आएगा पिक्चर में। जी की बात तब होती है जब मोशन होता है कोई पार्टिकल्स का, तो हम जी की बात करते हैं। लेकिन ई तो जहां भी मास बॉडी है उसकी फील्ड होगी। तो मैं जी इक्वल टू ई, बट मैं ई आर लिख रहा हूँ, और जब मैं ई आर लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये आर क्यू से कैंसिल हो गया, दोनों सेम वैल्यू है। बट ई आर इज वॉट, 4/3 पाई जी रो इंटू आर। अब देखिए, आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है। ये ऑल, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है ये। किसी पार्टिकल पे, किसी मास पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, वो अट्रैक्टिव होता है। तो यदि मैं मास पार्टिकल पॉइंट पी पे रख दूं, या इस जगह पे रख दूं, इनसाइड द अर्थ और इनसाइड द स्फीयर, सो इट्स force acting on it will be towards the center। It means the gravitational field is towards the center। सो टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या हो गया, जो आपने आर वेक्टर लिया है यहाँ पे, आपने जो आर वेक्टर लिया, ये जो आर वेक्टर आपका है, इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट टू आर वेक्टर। यस और नो, अपोजिट टू आर वेक्टर। अपोजिट टू आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखूं तो माइनस आर वेक्टर। यस और नो, I'm writing minus r. So I can write in vector form. Let me rewrite here. Gravitational field intensity inside the spherical body is minus 4/3 pi g rho r। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ये पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमारा पर्पस है कि आपको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताऊं इनसाइड द कैविटी। कैविटी का मतलब बता दिया, मास कैविटी की बात कर रहा हूं। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे चार्ज कैविटी में भी, स्फेरिकल बॉडी का। जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किसी उसी के अंदर कोई स्फीयर ले लेंगे जहां की कोई चार्जेज नहीं है, तो उसको हम चार्ज कैविटी बोलेंगे। जो कॉन्सेप्ट चार्ज कैविटी की होगी वही कॉन्सेप्ट मास कैविटी की होगी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा। तो आप देखिए, हम इसके इनसाइड, इस कैविटी के इनसाइड, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज कैविटी। इस मास कैविटी के इनसाइड इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल बोल रहा हूँ। सो लेट मी से एल इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Displacement, you can say displacement position vector of center of cavity with respect to center of sphere, right?
So that you got it. Now, what will be the gravitational field at P due to the sphere? अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि C at gravitational field at P, gravitational field at P due to the entire sphere. Just think, just kind of superposition you think. ये मान लीजिए पूरा स्फीयर है, कोई कैविटी नहीं, ऐसा मान लीजिए। ऐसा मान लीजिए कि पूरा स्फीयर है, कोई कैविटी नहीं है, कुछ पार्ट सैडेड है और जो पार्ट सैडेड नहीं है वो स्फीयर है, वो भी एक उसकी सेंटर C1 है और रिमेनिंग पार्ट क्या है, सैडेड है, आप ऐसा मान लीजिए। तो E at P due to whole sphere, complete sphere, E at P due to whole sphere equal to E at P due to what? ये जो सैडेड वन है, सैडेड वन है, सैडेड पार्ट प्लस E at P due to नॉन सैडेड पार्ट। Am I right this thing? जो सैडेड नहीं, जो नॉन सेडेड E at P due to shaded one plus E at P due to the non-shaded one is equal to what? E at P due to the entire sphere. Yes sir. मगर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि स्फीयर है और उसके अंदर कैविटी है। स्फीयर है और उसके अंदर कैविटी है, मतलब ये नहीं है ना, फिर क्या है? सिर्फ शेडेड है, नॉन शेडेड नहीं है। सिर्फ शेडेड है, नॉन शेडेड नहीं है। सिर्फ शेडेड होगा और नॉन शेडेड पार्ट होगा ही नहीं, तो वहां पे क्या होगी? कैविटी होगी। तो आपको जो निकालना है बच्चों, वो क्या निकालना है? E at P, E at P due to the shaded one, and this is what, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो E at P due to the whole sphere minus E at P due to the non-shaded sphere. So it is so simple now. The things are simple. We can do. Then what we can write? E at P due to the shaded one. P पे सिर्फ shaded की वजह से, मतलब क्या है, कैविटी के अंदर की बात कर रहा हूं। E at P due to only the shaded one means what? P is inside the cavity. Only shaded means what? We are not considering any mass inside this dotted line, right? Is what is that? Cavity. So E at ये इसकी वैल्यू क्या होगी? E at P due to the entire one, मतलब सब कुछ है, हर जगह मास है, यूनिफॉर्मली मास है, माइनस E at P due to non shaded one. So I am using this concept. This is simply the principle of superposition concept. So E at P due to whole क्या लिखेंगे बच्चों? E at P due to the whole is simply the एक स्फीयर है, अर्थ है, इसके अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो क्या होगा? मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, एक पॉइंट पी लेता हूँ, मैं लिया हूँ, ये पॉइंट मैं पी लिया हूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन किया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगी? आपकी सीपी वेक्टर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूं? देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है? -4/3 पाई 0 r। व्हाट इज आर? R is the position vector of the point where you have to find the gravitational field intensity with respect to the center of solid sphere. Yes or no? So what you can write R here? CP vector. No. So I'm writing here, students, -4/3 pi 0 r. R is what? CP vector. Minus. अब ये देखिए छोटे वाले नॉन शेडेड पार्ट, E at P due to नॉन शेडेड। नॉन शेडेड को अभी आप क्या समझ रहे हैं? इट इज नॉट कैविटी। अभी इसके लिए ये एक मास है और इसके लिए पॉइंट पी पे क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड? तो क्या होगी इसके लिए? या इसके सेंटर से लेंगे, ये भी एक स्फेरिकल बॉडी है, बस इतना ही अंतर है कि बिगर स्फेरिकल बॉडी था और ये क्या है? छोटा स्फेरिकल बॉडी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, क्योंकि अब अभी जो लेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड, वो यहाँ किस पॉइंट का लेंगे? पी का लेंगे, मगर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? सेंटर C1 रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड वाले पार्ट का, नॉन शेडेड पार्ट। तो क्या लिखेंगे? -4/3 और इसके लिए क्या वेक्टर यूज करेंगे? इसके लिए वेक्टर यूज करेंगे, वो क्या होगा? दैट विल बी C1, ये वाली वेक्टर यूज करेंगे। यस और नो? दिस वेक्टर इज व्हाट? C1p वेक्टर। व्हाट इज दिस वेक्टर? CP वेक्टर। ओके, so this is what? C1p vector. All right. So this minus and this one is plus. So what it will be? I can write, if I take common 4/3 pi g rho, I will get this minus plus. So I will get C1p minus
CP वेक्टर. आई होप यू गॉट दिस थिंग. ये माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4/3 पाई जीरो मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, C1P माइनस CP वेक्टर. नाउ यू सी केयरफुली दिस थिंग. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए ये C है, ये P है, ये C1 है, ये C1P है बच्चों, राइट. ये CP वेक्टर है, ये C1P वेक्टर है, और ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L था. Now you can very well from displacement flow you can write L vector plus C1P vector is equal to what? CP vector. Yes or no? So what you can write, C1P vector minus CP vector is equal to what? L will go that side, so minus L vector. So what we got? I got E at P due to only shaded part will be minus 4/3 pi G rho L. What I got basically, everything is a constant. L is also constant, but it is a constant vector minus sign. So gravitational field intensity inside the cavity is opposite to L vector, displacement vector. Displacement vector is what? Center of the body to center of cavity. So opposite to that. So let me redraw this diagram to understand you how the gravitational field will look like inside the cavity. So let me redraw it so that you will understand exactly how it will be. See, this is the solid sphere, center is C and some part is the cavity and its center is C1 and I am talking some arbitrary point P. What is the gravitational field you got? All these are constant minus L vector. This is L vector, right? This is L vector. So minus L vector is what? Parallel to this. Yes or no? So parallel to this will be what? This. This is what? Here. And it is independent, This is a constant. So everywhere inside the cavity, the field will be one and same, right? Everywhere inside the cavity, the field is one and same. And this is very useful, this idea, many problems you can solve with this concept. And one more, concept I am telling you here only, if you think a cell, if you think a cell, or you may think like this is a solid sphere, and take a big cavity. Take a big cavity such that their center coincide with the center of a sphere. Means I am taking the cavity like this. Yes or no? This is C. And C dash is also coinciding here only. So C dash is basically what? Which is L vector is basically what? 0. And what it will look like? It will become what? It will become cell. Yes or no? Then any point P, what is the field? I said the field will be what? Field inside the cavity when we can say is minus 4/3 pi g rho L vector. What is L vector here? Both the center coincides. So L vector is what? 0. Yes, it is 0. So it is 0. So we know this is what Newton said in it postulates that for a spherical body, the gravitational field intensity inside is equal to 0 and we are getting from the cavity constants. So this is a quite useful idea and many problems can be formulated on this concept because everywhere the field is constant. Here this constant is 0. If it is a cell, but otherwise it will have a constant value. So all right, student, this is about cavity. I will take some problems later and what are different, the questions can be arise here so that I can, let me tell you some basic questions based on it. Some interesting questions, like suppose a question is given like this. There is a cavity of radius r/2 like this and if it is, like this, so this is the C and this is C1, then what will be the axis, it is asking a particle is released, say at C1, a particle is released at C1 of mass M, how much time what is the path of the particle, first of all? See, if it is released, then the gravitational field is this. Gravitational field is this. So we can say
the acceleration of the particle is equal to the gravitational field. So E inside the cavity, you know its value is minus 4 by 3 pi g rho L. Here L vector is what? If radius is r, then L vector is what? R by 2. So it will be what? Minus 4 by 3 pi g rho r. Magnitude I am telling you. Direction is what? Opposite to L vector. This is L vector, so opposite to that, so towards C. So magnitude, if I say the E inside the cavity, which is a constant, its magnitude is this. And this is equal to what? The acceleration of the particle. That we know E is equal to what? G. At everywhere, the acceleration due to gravity is equal to the gravitational field at that point. So, in context of gravity, I am telling you, we are not considering any charge or other forces. So, please keep this thing in mind. So, A, that is called basically acceleration due to gravity. So, this is acceleration due to gravity and its value is how much? 4 by 3 pi g rho r. और पार्टिकल तो मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा किधर जाएगा? इसकी एक्शन इस डायरेक्शन हो गया, अपोजिट टू एल. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस. सो अपोजिट टू दैट, सो इट विल गो टुवर्ड्स सी. सो मैं पूछूंगा एग्जाम में आपको, यदि कोई जेई एडवांस में आता है या मेन में, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द सेंटर ऑफ द स्फीयर. Yes, I can do it. Because I know A, then I can use the formula, because it is a constant acceleration. I can use the formula S is equal to ut plus half at square. And S is what? R by 2, the distance. U is 0, it is released, then it is a 1 by 2. A I know. 4 by 3 pi g rho r into t square, and from here I got t is equal to 2 and 2 is out, so 3r by r is also out, so 3 by 4 pi g rho under root. So this is how you can find. So many similar questions you can formulate, you can do, because this is a very good concept. After all, you got it, that inside the cavity the gravitational field is constant, and that is very similar to, like a object is projected under gravity, and we know that its path is projectile parabolic. It goes up and then coming down like in a parabolic path. So similar thing can be also formulated inside the cavity, because their acceleration inside the cavity is constant. So we can do, even we can throw the object inside the cavity, and we can, its path will be parabolic, right? So one moment, students. One moment. So if the object is like this here, you may think what I am talking in fact. So if I say, if I have projected an object like this, because the question is this side, am I right? This thing, a projected like this, what its path? Its path will be like that. Yes or no? If it is, if it is projected like this here, if released, then it will go like that. If it is projected like this, so its path will be parabolic, like simple, very similar to the projectile motion. So this concept is useful, and the same concept is applicable in case of electrostatics. If I take the spherical charged body and a spherical, if another spherical charged body is cut out, taken out from it, then that void space will call the charge cavity, and no doubt you will get the similar thing, that electric field inside the charge cavity will be constant. Only thing, in place of G you replace it by 1 by 4 pi epsilon naught, and in place of M you have to replace by Q basically. So you will get the digits a bit different. I will explain those things in different videos, in different, But here I have said you the idea that in cavity, mass cavity, and I hope you got the things. If you have any difficulties related to that, please write in comments. I will discuss in with details if it required. ऑल राइट, आई होप मैंने आपको सारी बात बताया और आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. आप मुझे कमेंट करके बताइए, यदि आपको कुछ डिफिकल्टीज हो तो मैं डिस्कस